Hello students. Now I am going to start the biology classes, and now we are going to start a chapter, structure of chromosome and cell cycle. So the chapter is structure of chromosome and cell cycle. So this is very basic chapter, and before going to the detail of the structure of chromosome, first we need to understand what is the nucleic acid. So the nucleic acid is the biological molecule, and why we need to understand the nucleic acid? Because there is some similarities. Why we need to understand this chapter? First of all, there is a similarities between the two siblings, or there is a similarities from, if we see the offsprings to the parents. So there is a similarity between the offsprings and the parents, similarities between the two offsprings. So what is the root cause of this similarity? So the reason of this similarity is due to a specific structure that is passed on from one generation to the next generation, that is from the parent to the offspring, and that structure is nucleic acid. Okay, so before going to the detail of structure of chromosome, first we will understand the nucleic acid. So the nucleic acid is a biological molecule, or we can say that the biological polymer. So biological molecule, biomolecule, or we can say that biopolymer. Biopolymer. Polymer means that is the chain of monomer. That is a single unit which unite in a multiple times. Suppose if we talk about the starch, if we talk about cellulose, if we talk about glycogen. So these are the polymers of glucose. These are the polymers of glucose. So the glucose is a monomer molecule. They are unite in multiple times and give the structure like a polymer. So in a various way they are unite to with each other and gives the polymer. So the polymer means there is a chain of monomer. Okay. So similarly, the nucleic acid is a biomolecule or the biopolymer. It means it is able to degrade. It is non-toxic. It's easily biodegradable. So that is why it is a biopolymer. Bio means biologically they are biological molecule. Now, if we talk about the discoverer, so nucleic acid was discovered by first discovered by a scientist, biologist, Fradriek Meischer. Fradriek Meischer in 1869, and from where he was isolated from the nucleus, isolated from the nucleus of WBC, white blood cells. That is extracted from pus. So the first of all nucleic acid was discovered by Fradriek Meischer and named it nuclein. So this is the acidic molecule, and give the name to this acidic molecule as a nuclein. Later on, in 1889, a scientist named is Altman
Altman gave the term nucleic acid. So gave the term nucleic acid. Nucleic acid. So this is the discoverer and who has given the name. So Fradriek Meischer, scientist, first of all has seen this molecule from the nucleus of WBC extracted from the pus and named it nuclein. Later on, the proper term nucleic acid was given by a scientist, Altman, in 1889. If we talk about the types of nucleic acid, so types of nucleic acid, there are two types of nucleic acid. Nucleic acid, so two types, DNA and RNA. Most of the student has aware about this name. DNA means deoxyribonucleic acid and RNA means ribonucleic acid. Okay, so there are two types of the nucleic acid, and nucleic acid is the molecule having the genetic information. So these nucleic acid act as a genetic molecule. Genetic molecule. In most of the cases, DNA as a genetic molecule, we have like a genetic molecule, but in some of the organisms, RNAs also act as a genetic molecule. So if a molecule we have as a genetic molecule, what criteria should be found? So the characteristic feature of nucleic acid as genetic molecule. Genetic molecule. While we understand these molecule as a genetic molecule, so there should be some criteria which is not found in the protein, which is not found in the carbohydrate, which is only found in this nucleic acid. So what criteria should be there? So first of all, if we talk about the criteria, first of all, what criteria should be there? Nucleic acid, the molecule, carries genetic information. So it carries genetic information. So what the characteristics the body shows, it is due to the information, it is due to the genetic information. So this molecule, this nucleic acid molecule carries the genetic information. Second, it is stable molecule. The molecule should be stable. So if the molecule is not stable, then it cannot be, we have like a genetic molecule. So it should be stable. Third, the genetic molecule able to replicate. It means, what is the meaning of replication or replicate? It makes its own copy. It makes its own copy. Suppose we have information on one page. If we want to give to the two students, so can I tear the page? If I tear the page, the information becomes half. So
the information should be same, and how can it give it to the two students? To make it a copy. So replication means the molecule make its own copy. Okay, so the genetic molecule having the characteristics they are able to replicate. Number 4, these molecules show mutation. They able to show mutation and variation. Able to show mutation and variation, and this mutation or variation is the cause of evolution. So it is the cause of evolution. It is the cause of evolution. So it able to show mutation and variation, and if the mutation and variation is not occurring in the nature, then evolution will not be occur. Okay, and this mutation or variation should be stable and passes to the next generation, that is inheritable, and it should be stable. And inheritable. Okay, so inheritable means they able to transfer from one generation to the next generation. Okay, so the next is number 5 is they able to express their information. So it able to express its information or their information in the form of protein, through the process of transcription and translation. So we will understand these terms later on. It means the information which is found in the nucleic acid, it expressed in the form of protein. Okay, and this protein is synthesized through these two processes, that is transcription and translation. So if the molecule we have like a genetic molecule, they able to show some features. The features like it able to carry the genetic information. It should be stable, यानी कि नेचर में स्टेबल होना चाहिए. अगर वो बार बार चेंज होगा तो फिर प्रॉपर्टी बदल जाएगी और जो कैरेक्टर्स हैं वो एज इट इज ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे. Able to replicate, it means they able to make its own copy, यानी कि वो अपनी कॉपी भी बना सकता है. यानी अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी भी बना सके. So able to replicate means able to make it own copy, अपनी कॉपी को बनाना, that is replicate करना. They able to show mutation. Mutation is the root cause of changes. There sudden changes, that is variation is also the cause of changes. So अगर कोई भी change हो रहा है because of the environmental, because of the some other reason, तो यहाँ पे वो जो changes हैं वो stable होने चाहिए genetics में, यानी उस molecule में वो दिखने चाहिए और वो अगली generation तक pass on भी होने चाहिए. So they able to show mutation and variation, and these two things are responsible for the process of evolution. तो अगर ये variation नहीं होगा, mutation नहीं होगा, तो फिर जो evolution हो रहा है वो नहीं होगा. It should be stable and inheritable, and the last, it able to express their information in the form of protein.
तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो जब भी डीएनए से या आरएनए से जब भी कोई प्रोटीन बननी होती है तो सबसे पहले वो ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर ट्रांसलेशन होता है। So these are the basic features of any molecule to behave like a genetic molecule. Okay, so कोई भी molecule अगर genetic molecule है तो उसके अंदर ये कुछ basic features होने चाहिए। Now, if you talk about the DNA, so in most of the cases DNA जो होता है वो genetic molecule की तरह होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको आगे समझेंगे। So अगर हम DNA की बात करते हैं, डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। डीएनए के पास ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं। ये सारे फीचर्स जो हैं वो डीएनए के पास होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आरएनए के पास भी होते हैं, बट डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए के कंपैरिजन में, एंड दैट इज व्हाई नेचर हैज चोजन डीएनए एज अ जेनेटिक मॉलिक्यूल। So before going to the detail, first we need to understand what is the DNA, what is DNA, and हम इसके molecules को थोड़ा सा open करेंगे कि ये इस DNA actually है क्या, ये दिखता कैसा है। ठीक है ना? तो DNA जो होता है वो basically polymer है। It is a polymer of nucleotide। nucleotide जैसे हमने पहले भी बोला था कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और वो बायोपॉलीमर है, यानी कि चेन ऑफ मोनोमर है। तो जो चेन है वो किसकी बनी हुई है? न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई है। सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एंड इफ यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसको थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज sugar. The second is nitrogenous bases. Nitrogenous bases. And the third one is phosphoric acid. Phosphoric acid. So there are 3 things in the nucleotide: pentose sugar, nitrogenous base and phosphoric acid. पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन। इट मीन्स ये जो शुगर है वो कितने कार्बन का है? ये 5 कार्बन का है। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करेंगे और फॉस्फोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो शुगर है 5 कार्बन का वो 2 तरह का शुगर है। जैसा मॉलिक्यूल होगा वैसा शुगर होगा। इस पेंटोज शुगर को हम रिबोज शुगर भी कहते हैं। रिबोज शुगर दैट इज 5 कार्बन शुगर, क्योंकि 5 कार्बन का है तो हमने क्या नाम दे दिया? पेंटोज शुगर। एग्जैक्टली इसका क्या नाम है? रिबोज शुगर। तो जो रिबोज शुगर होता है वो आपका कैसा होता है? ये कैसे अगर हम 5 कार्बन का शुगर बनाएंगे, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। So if we talk about the 5 कार्बन शुगर, तो 5 कार्बन का शुगर हम सिंगल चेन में बना सकते हैं। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड कार्बन नंबर 5 हमने बॉन्ड से जोड़ दिया। यहाँ पर डबल बॉन्ड O and H, and this is H, OH, H, OH, H, OH, H, OH and H. So this is the pentose sugar, 5 carbon sugar. So this is pentose sugar in the form of chain. But in the chain form ये stable नहीं होता है। नेचर में ऐसा chain form ये stable नहीं होता है। तो ये जो होता है वो change हो जाता है। किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? रिंग फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो जब पेंटोज शुगर रिंग फॉर्म में चेंज होता है तो ये इस तरह का रिंग बना लेता है। 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का ये रिंग बना लेता है। सो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। ओके, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ये
बॉन्ड बनाएगा नंबर 4 वाले मॉलिक्यूल से, यहां से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा HOH, ठीक है। फिर यहां पे अंदर H, बाहर से OH, H, OH, H, एंड यहां पे हो गया CH2OH। सो दिस इज द 5th कार्बन, कार्बन नंबर 5। ये जो है वो कार्बन नंबर क्या है, 5 है। दिस इज कार्बन नंबर 5, CH2OH। ओके, सो दिस इज अ फ्यूरेनोज रिंग। दिस इज द रिबोज शुगर, रिबोज शुगर, और इस रिंग को हम कहते हैं फ्यूरेनोज रिंग, फ्यूरेनोज रिंग, फ्यूरेनोज रिंग। सो फ्यूरेनोज रिंग कितने कार्बन का है, 4 कार्बन प्लस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है। कितने कार्बन से बना है, 4 कार्बन का बना है और एक ऑक्सीजन का बना है। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करेंगे, 5 कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पर एक जो कार्बन होगा वो फ्लैंकिंग हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन से बना रिंग जो है वो फ्यूरेनोज रिंग है, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिबोज शुगर, एंड दिस इज मोर स्टेबल देन दिस चेन फॉर्म। सो नेचर में ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर ये पेंटोज शुगर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीएनए के बारे में, कि जब अगर डीएनए की बात हम करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका कहाँ पाया जाएगा, आरएनए का शुगर हो गया, क्योंकि आरएनए में हम क्या लिखते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज राइबो शुगर। लेकिन जब हम डीएनए की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे कि यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए के कंपेयर में। तो यहाँ पे जब बात करेंगे कार्बन नंबर 1, 2, 3, कार्बन नंबर 4, एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। तो जब हम डीएनए के डीऑक्सीरिबोज की बात करेंगे तो यहाँ पर वही सारी चीजें होंगी, बस थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 है, इस OH की जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। सो दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम, and the rest part will be same, that is H, OH, this is H, and CH2OH. So अब इस शुगर का क्या नाम हो गया, डीऑक्सी रिबोज शुगर, ठीक है। So this is the pentose sugar, but at the second carbon, this OH group is replaced by simply by the hydrogen. So this is called deoxy, ऑक्सीजन का निकल जाना, that is deoxy। तो यहां से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो हम क्या बोलेंगे, deoxy। सो यहाँ पे क्या हो गया, एट द कार्बन नंबर 2 the oxygen group is removed, or we can say that OH group is removed from the hydrogen। okay? तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, सिंपली ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, डिलीट हो गया। तो दैट इज डीऑक्सी रिबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो अब यहां पर ये आरएनए का हो गया और ये कहां हो गया, ये डीएनए का शुगर हो गया, दैट इज सिंपली डीएनए शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, दैट इज द राइबोज शुगर। सो व्हाई द, अब इसमें क्या ऐसा है जो बहुत बेहतर हो गया, क्यों डीएनए ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ पे 2 OH ग्रुप दिख रहा है, एंड द OH ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव ग्रुप, बहुत ज्यादा रिएक्शन करके दूसरे मॉलिक्यूल से जल्दी रिएक्शन करेगा और बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 की जगह क्या हो गया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह गया। तो जितने ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप कम होंगे उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी भी कम होगी, और जितनी कम रिएक्टिविटी होगी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो इसीलिए डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द आरएनए। ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम से पूछा जाता है कि व्हाई द डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। सो बिकॉज ऑफ द शुगर इन द डीएनए, इन द डीऑक्सीराइबोज शुगर, at the carbon number 2 the hydroxyl group is replaced by the hydrogen, that is why the number of reactive molecule decreases
reactivity decreases and stability increases. So that is why the DNA is more stable, RNA is little bit ज्यादा reactive हो जाता है as compared to DNA से. तो जो ज्यादा स्टेबल होगा नेचर उसी को एज अ जेनेटिक मॉलिक्यूल की तरह यूज करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी इस चीज को स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करेंगे और फॉस्फोरिक एसिड, और फिर इन तीनों को हम यूनाइट करके एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे. थैंक यू सो मच.